The Students' Islamic Movement of India, or Simi, is an Islamist fundamentalist organization that advocates the disintegration of India by its conversion to Islam. Or is Simi just an ultra-conservative, politically conscious Islamic students' body that does not challenge the existence of India? It just rubs the system the wrong way. Two diametrically opposing points of view with friction being the constant between them. But today, we are going to sift through evidence and we are going to look at some fundamentals and try to bring out the truth about Simi. And I am SUJAY. इसके कानून और विधान हम मानते हैं। पूरे हिंदुस्तान के लोग आजम के ऊपर निशाना लगाए हुए हैं। अबुल बसर को छुड़ाया जाए, वो निर्दोष है। This is a bias investigation where particular community has been targeted. ये इन ब्लास्ट के मास्टरमाइंड है। गुजरात के अंदर अब ब्लास्ट हमें करने का है, उस तरह का इन्होंने प्लान किया। कहा कि जो भी संगठन इस तरह के हैं सबको बैन करिए। We begin the sifting of the truth from Azamgarh, a district headquarters in eastern UP with a population of 55 lakhs. We chose Azamgarh because it is from here that the police allege that Mufti Abu Bashir went to mastermind the blasts in Ahmedabad. And it is because of reasons like this that the small town Azamgarhs of India get branded as centers of religious extremism. The latest link of Azamgarh in the terrorist network is Abu Bashir. The police allege that Abu Bashir was the mastermind behind the July 26th Ahmedabad serial blasts. But according to those who know Bashir, the investigating agencies do not have any concrete evidence. हमारे गांव में जो लड़का पकड़ा गया है वो टोटल गलत लोग पकड़े हैं। वो बहुत शरीफ घराने का और शरीफ लड़का है। 40 साल से हम जानते हैं उसके घर से किसी से झगड़ा नहीं हुआ, ना तो लड़का किसी से झगड़ा किया। वो अपनी गरीबी में 1500 रुपया पढ़ाता था, अपने परिवार की परवरिश करता था। But the anti-India link of small-town Azamgarh does not begin with Abu Bashir. It begins with a doctor of Unani medicine, Shahid Badr Falahi. Falahi was the president of Simi in 2001 when the organization got banned. He was arrested on September 27th of that year under allegations of being the mastermind of a jihadi group to destabilize India. There were multiple cases filed against him and Falahi spent more than 2 years in jail before being granted bail. In some of the cases since then, Falahi has been acquitted. हमारे ऊपर ऐसे इल्ज़ामात लगे, हमने उसको जैसे पूरा क्लियर किया ट्रिब्यूनल में, और यही वजह है कि जज ने फैसला सुनाया हम पे बैन उठाने का। और ये एक स्टे है जो अभी आप देख रहे हैं टेम्पोररी। इस तरह की सैकड़ों इल्ज़ामात का सब बेबुनियाद बातें हैं, झूठे इल्ज़ामात हैं, हम पे लगाए जा रहे हैं। हम उसका दिफा भी करते हैं, वजाहत भी करते हैं। Two alleged anti-Indians with one link, Azamgarh. But in their local communities and cutting across communal lines, both were and are still respected as individuals. And for that respect to die, Falahi and Bashir need to be proved to be guilty in a court of law, not just accused. The Simi was banned 7 years ago and about 24 years after it was formed. For almost a quarter of a century, many generations of conservative Muslim youth participated in the bonding of Simi. But with its banning in 2001, began a cycle of arrests, allegations and court cases. Simi was banned in 2001 under the Unlawful Activities Act 1967, and almost all Simi office bearers and many members were arrested. 4 bans in 7 years imposed every time the previous ban expired. On August 5, 2008, Delhi High Court rejected the ban on Simi. On August 6th, the government approached the Supreme Court for a stay on the order. The Apex Court stayed the High Court order for a minimum of 3 weeks. But at the individual level, the whole terrorist suspect saga has a recurrent theme. First, there are arrests, then questioning, and finally, release due to lack of evidence. And here are some glaring examples for you. हिंदुस्तान की के इस निजाम पर भरोसा करना, मुसलमानों का हिंदुस्तान की इस पूरे मुकन्ना पर भरोसा करना, पार्लियामेंट पर भरोसा करना, यहाँ की इंतजामिया और यहाँ की पुलिस और कोर्ट पर भरोसा करना, और हिंदुस्तान के मुसलमानों का यहाँ की अदालत पर भरोसा करना, एक धोखे की अदालत हिंदुस्तान
Is distrusting things around you make you a terrorist? The prime suspect is Safdar Nagori, the 2001 General Secretary of Simi, who was arrested on 26 March from Indore. It has been alleged that he planned the Malegaon blast. The evidence: the police found potentially explosive training material on Nagori's desktop. He's still in custody. Next major suspect in the bomb cases is a man called Tawqir. He's implicated because he's an ace IT expert, and that about as much evidence that is there on the man right now. Another IT man, a 3-year-old employee, is also a terror suspect. It's really unrelated in some sense. We do background checks, and when we find that there is a discrepancy, we have to take action. That we have been doing. So it's not related. It just happened to coincide. That's all. And just recently, 2 men from Savai Madhopur has been detained for questioning, and this time too, it seems to be on a hunch. What has happened is that often in many of these cases, there's a lot of pressure upon the police to show results. They need to show closure of investigation. They need to show that actually some progress has been made. So the more the pressure mounts, to find some quick solution, some quick answers. And Simi's become a scapegoat for the police in such cases. Extending the scope of suspects, the cops even got a doctor in the net. Anwar Hussain was working with the All India Institute of Medical Sciences when the Jaipur serial blast took place in March, was detained in Jaipur on allegations of being a Simi activist. He had to be later released, again due to lack of any evidence. Dr. Shahid Badr Falahi was the national president of Simi when it was banned, and Safdar Nagori was his general secretary. Today, Nagori is in prison, and Dr. Falahi has many cases pending against him. We are going to talk to Dr. Falahi and ask him a few questions. Dr. Falahi, आप ये बताएं, do you think that Nagori is a terrorist? ये बिल्कुल एक झूठा इल्ज़ाम है ये, जो मीडिया के ज़रिए से लगाया जा रहा है। जब मैं ऑल इंडिया प्रेसिडेंट था, उस टाइम सफदर नागौरी सेक्रेटरी जनरल थे, और उस वक्त जब सिमी बैन लगा है, तो उस टाइम ज़्यादा ब्लेम शाहिद बदर पे था कि मेरे भड़काऊ भाषण, मेरी स्पीचेस है ना, देश के ख़िलाफ़ हैं, और यही सब केसेस मेरे ऊपर लगाए गए थे। अब जबकि बैन उठ गया है हमारे ऊपर से, तो लगता है ऐसा है गवर्नमेंट को कि किसी नए को जो है हम एक्सपोज करें और उसको कहें कि ये बहुत बड़ा टेररिस्ट था, ताकि 7 साल के बाद इस केस में और जान आ जाए। जो सिमी के आइडियल्स हैं, आप इस्लाम को प्रोपोगेट करना चाहते हैं, आप जीना चाहते हैं कुरान के बेसिस पे, और जिहाद फॉर द कॉज ऑफ इस्लाम करना चाहते हैं, जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंडर, आपको लगता है ये पॉसिबल है? अल्लाह की रज़ा के लिए हम काम करते हैं और उसी के लिए हमारी कोशिश है। हमारा मानना ये है कि जो लोग इस ज़मीन पे बसते हैं, उन सब लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना है, मौज़त से, यानी अच्छी नसीहत से, मोहब्बत से, अच्छे डिस्कशन से। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम किसी पे कोई चीज़ इम्पोज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसके लिए हम कोई जबर का रास्ता अख्तियार करते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने मना फरमाया है कि ला इकराह फिद्दीन, यानी दीन में कोई जबर नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हम आपको बुलाएंगे इस्लाम की तरफ, इस्लाम की तालीमात को बताएंगे आपसे। अगर आपको लगता है कि हमारे दिल की आवाज़ है तो बेशक आप लब्बैक कहेंगे। नहीं, और अगर मैं नहीं आऊँ तो कोई मसला नहीं, हमारी ड्यूटी यहीं पे ख़त्म है। यानी कहीं पे ऐसा नहीं कि आप पे जबर होगा, नहीं आप हर हाल में इस्लाम को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं। हमारा काम क्या है? वमा अलैना इल्लल बलाग, खाली अपनी बातों को पहुंचा देना है, ख़त्म सी बात। नहीं, अब बताइए कि इसमें जो है ऐसा करने में क्या परेशानी होगी? सिमी कंसिडर्स इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ इंडिया। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। इसी मुल्क में हम पैदा हुए, यहीं पले बढ़े, यहीं पढ़ाई लिखाई की, यहीं रहते हैं, यहाँ तक कि हमने पासपोर्ट तक नहीं बनवाया है। आप कहते हैं कि हम अपने आप को इंडिया का पार्ट, ये तो क्वेश्चन ही हंसने लायक है। We are looking for the truth about Simi, and coming up, we go investigating in Kerala, where the Gujarat police claims Simi ran a terrorist camp. Rohini Swami goes on the ground to find more questions than there are answers.